Good morning, students. Today we are going to read about the topic diffusion and osmosis. I hope you all are studying well and you have learned about the concept discovery of cell. Okay, you have read about the cell theory and you have also learned about the shapes and the difference between the unicellular and multicellular organisms. In the last part of the video, I have also discussed about the division of labor. Today, we are going to discuss another important aspect, that is diffusion and osmosis. What is diffusion? You have already read about the diffusion in chemistry. There, you have read that the motion of the particle takes place from one place to another. Okay. Here in chemistry, we have the motion from one place to another. But in biology, what adds up is the motion of the particle will take from a region of high concentration to a region of low concentration. Example, if you have burned an incense stick in one part of the room, you will get its smell in the another part of the room. How will you get the smell? The particles of incense stick from one part will move to another part. Okay. How? One part will have higher concentration of smelling particles, another part have low concentration. From the region of high concentration, the particles will move towards the region of low concentration. So that was in case of chemistry. So how? There is the use of diffusion in biology. Okay. In biology, the gaseous exchange of cell take place through diffusion. Whenever the concentration of CO2 is high in the cell, what will happen? It will move out of the cell to a region of low concentration. Actually, what happens? The cell will have a high concentration of CO2. The outer of the cell will have a low concentration of CO2. Due to this diffusion, the CO2 will move from inside the cell to outside the cell. Okay. Similarly happens with the CO2. Okay. That is in the case of unicellular organism. In the case of oxygen, what happens? The surrounding air have a high concentration of oxygen. From there, the air will enter into the cell. Okay, the oxygen will enter into the cell by the process diffusion. Okay. In diffusion, there is no need of any membrane or any external force. Okay. There you do not provide any extra energy. Okay, to transport it from one place to another place. वहां पे किसी पार्टिकल को आप एनर्जी नहीं देते कि वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाए, वो खुद ही जाते हैं. ठीक है. That's why that is a case of passive transport. Remember the word passive transport. जब हम किसी चीज का ट्रांसपोर्ट बिना अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, that is called diffusion transport. That is called passive transfer. Okay, sorry for that. Next topic is osmosis. You have read diffusion. So what is osmosis? Actually, in osmosis, there adds one special membrane called semi-permeable membrane. What is its specialty? It allows to transfer only selective materials to pass. Okay. Only selective materials, like I am considering the water molecules, it will allow only water molecules to pass through it. Okay. So let me consider a semi-permeable membrane which is dividing this beaker into two parts. Okay. On the one side, we have taken a concentrated solution of sugar, and on the another side we have a little concentration solution of sugar. Okay, here you can see these
darker dots are sugar molecules while these lighter dots are water molecules. As I have told you that this membrane is only allowing to pass water molecules from one side to another side. Students, the nature around us demands the stability or the normality. Okay, हम लोग के आसपास जैसा माहौल होगा हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, बीच में एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने देती. दूसरी तरफ एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शुगर, और यहाँ पे क्या शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर. अब होगा क्या, होता ये है कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स तो इधर से इधर जा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन लगी, वो जाने नहीं दे. तो क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर पास होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अब उससे होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस साइड से उठ के आपके इस साइड में आ गए. इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को इधर से इधर पास होने दिया. ये पास तब तक होने देगा जब तक क्या हो, दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, यहां के साइड का जो हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन था वो अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन. दोनों ही साइड का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, सेम कंसंट्रेशन. ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक क्या होगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, ना हो जाए. तो water molecules will pass until the concentration on both sides is same. Got it? तो बेसिकली ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोसिस है वाटर का फ्रॉम अ मोशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन to a region of low water concentration, from a region of high water concentration to a region of low water concentration. You can see here the water molecules have moved from this region to this region. Okay, here the membrane is allowing only certain water molecules to pass. Remember, in osmosis what we need, a semi permeable membrane. What it will do, it will allow only selective material to pass. Okay, the water will move from a region of higher water concentration to lower water concentration. There is another term, osmotic concentration. बेटा osmotic concentration इसका रिवर्स होता है वाटर कंसंट्रेशन. जहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां का सोल्यूशन आप अगर मैं आपका कुछ से सपोज करिए मैंने चीनी का शरबत बनाया, ओके, शुगर का मैंने सॉल्यूशन बनाया, अगर उसमें शुगर ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी मोर कंसंट्रेटेड. इफ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर एंड द शुगर इज वेरी लेस, इट विल हैव लार्ज वाटर कंसंट्रेशन. ओके, सिमिलर हैपेंस हियर. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मींस यहां पे जहां पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, मींस जहां शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा, इट मींस मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मींस लो वाटर concentration. These two terms are equivalent. Okay, so इस केस में क्या होगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर मूव कर रहा है, या फिर मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मूव कर रहा है मॉलिक्यूल. ओके, अब इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं. फर्स्ट इज योर हाइपोटोनिक, सेकंड इज योर आइसोटोनिक एंड थर्ड इज योर हाइपरटोनिक. ओके, जब आपका दो सॉल्यूशन रखे हैं जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लो होगा, अब मैं वाटर कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहां पे कम होंगे. तो जहां पे लो कंसंट्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. ओके, जब आपका क्या होगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम होगा दैट विल बी आइसोटोनिक, और जब क्या होगा, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दूसरे से दैट विल बी हाइपरटोनिक. So these are the three terms related to osmosis. इसी रीजंस की वजह से आपके क्या होते हैं, जो रेजिन होते हैं, जो किशमिश होती है, वो क्या होती है आपकी, स्वेल अप एंड श्रिंक करती है. ओके,
So this is the diffusion. Student, go thoroughly with your book. Okay, read this topic. I will provide you the notes of this topic later. Thank you.